यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। हो चुका है साथ हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन 3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे द सेप्टर नाम की बिल्डिंग में, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एंड उस बिल्डिंग में जाके हमने मार्कस स्टॉइनिस और एक और कोई बंदा था, उसको हम निपटा के आए थे। एंड उसके बाद में हम लोग वहाँ से एग्जिट हो गए थे। एंड अब देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या मिशंस करने। एंड चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। एंड लेट्स गो एंड कैर इनटू द गेम गाइस। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। एंड देखते हैं आगे। That's your winning face. I'd hate to see you lose. ओके We underestimated the constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. ओके He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. ओके I don't like executive decision makers. अच्छा Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's okay. time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll Okay. make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. ओके I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? ओके Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll ओके find you. सो अभी पता नहीं गाइस, किसी का तो भी कॉल है इसको। We handed ये you an हमारी empire. असिस्टेंट है It's जो for हमें the कान best. में हमेशा The ब्लूटूथ के थ्रू partners were बताती रहती है कि हमें complacent, क्या करना है। set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. ओके सो अभी हमारी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो चुकी है, पता नहीं। ओके सो हम लोगों ने जहाँ पर मतलब हमारा मिशन एंड हुआ था, उसके आगे कुछ कट सीन्स आया था। एंड अभी हम लोग आगे प्रोसीड कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा अगला मिशन जो है, डेथ इन द फैमिली, एंड ऑफ द लाइन। ओ भाई साहब। ओके तो अभी हम लोग कहीं तो भी आ चुके हैं। She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, Okay. the end of the line. You ready for this? एंड ऑफ द लाइन। Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. एलेक्स क्रिश्चियन चार्ल्स। Alexa Carlyle is dead, according to the funeral invitation. that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Oh, Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally,
It was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. ओके It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. तो गाइस जो ये कार्लाल है ना, इसके साथ में गाइस हुआ क्या है कि इसने पूरी दुनिया में ऐसा भ्रम Thornbridge फैला रखा Manor, है कि the वो मर Carlyle चुकी है, family's home for पर countless असल में generations. वो जिंदा है। तो The गाइस ये Reverend मतलब Alexa उसने Carlyle एक and अलग her ही three लेवल का adult कांड children, कर दिया है younger कि brother Zachary, पूरी दुनिया के सामने grandson ऐसा and बता रही है कि वो daughter-in-law मर are all चुकी है, बट gathered to असल में conduct वो जिंदा है। Carlyle's sham एंड funeral. अभी उसके घर में किसी की डेथ हो Curiously, चुकी है, तो Carlyle summoned a एक famous बंदा London उसका PI मतलब soon after इन्वेस्टिगेट arriving this करने आ रहा morning, है, but कोई his purpose at डिटेक्टिव। Thornbridge is yet unclear. तो हमें Now, शायद the इसी बंदे target की शक्ल knows लेनी that है। you're coming, and her guard detail is top-notch. ओके So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. ओके Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ओके सो गाइस अभी हमें यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ में, एंड थोड़ा सा गाइस ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो गाइस ये देख पा रहे हो आप, क्या बड़ा घर है गाइस, वो भाई साहब। Phineas Whitmer. ओके Right, इंटेल that's मिल it. चुका है। I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. ओ भाई You can go साहब right in. बच गए अभी That तो। is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired ओके by तो Madame गाइस ये Carlyle कोई this morning. प्राइवेट I'm इन्वेस्टिगेटर curious है। why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. ओके A famous seems private strangely weird. investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. ओके तो गाइस अभी दीवार टप के चले जाऊँ क्या? दीवार टप सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके दीवार टप ली गाइस हमने, दीवार टप ली है। पर गाइस दिक्कत की बात ये है कि पीछे दो बंदे खड़े हुए हैं। चुपचाप से अभी हम लोग इधर चलते, एकदम चुपचाप से गाइस, चुपचाप से हम लोग अभी इधर चल देते हैं। ओके तो अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है। ओके तो यहाँ से भाई 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 आगे चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से दीवार टॉप के मैं इस तरफ में आ चुका हूँ। और देखते ओ भाई कौन दिख रहा है भाई, बच गए गाइस बच गए। अबे अबे भाग 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 इधर, कैसे भी तो कांड हो जाता। I'm sure I saw something. ओके I'm just tired. नहीं 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 भाई तूने कुछ नहीं देखा, अरे वो I कुछ know नहीं I देखा, ought तूने to say कुछ the नहीं same, देखा, but यहाँ कोई नहीं है, thoroughly enjoying यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। Everything was so strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. But then the awful ओके business with तो her brother अभी वो तो Zachary. गाइस अंदर जा रहा है, हमें शायद And इसी की all जगह this लेनी पड़ेगी। security. I've never seen the place guarded like this, and I dare Oh, say by I the don't way, like it at all. I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but ओके she तो just thanked अगर me. अभी Said मैंने she ये वॉल understood the टॉप की तो भी position I दिक्कत was हो in. जाएगी। We had a really good talk about ओके it. यहाँ पर थोड़ी Oh, what did I जगह tell you? है तो इस She's a तरफ sensible से woman, चुपचाप and से that मैं stuff from इधर आ here जाता acts हूँ। like manipulation Have to stand 101. before you I see know. Madame Carlyle inside. I guess I thought she was going to read into them and freak out. Say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline's really hit his number up. बच गए। 3 2 1 आइए। तो कैसे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अंदर। अभी शायद से वो बंदा इसी तरफ में आएगा। ओ भाई 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 कोई तो दिख रहा है, कोई तो था भाई, कोई तो दिख रहा है। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इधर आने वाला है गाइस, मेरे को पक्का यकीन है ये इस तरफ में आने वाला है। देखते हैं अपना इंटेल किधर जाता है, मतलब जिसका अपने को जगह लेनी है वो बंदा किधर जाता है। अगर वो इसी तरफ में आएगा तो भाई अपना तो भाई काम हो गया फिर समझ लो। पर देखने वाली बात ये थी कि वो किस तरफ में आता है। इधर आ जाए यार। ओ भाई साहब क्या लक है भाई, एकदम सही खिड़की में। एंड यहाँ पर एक अलमारी भी है जिसके अंदर हम इसको मार के डाल सकते हैं।
तो फटाफट से अभी यहाँ पर इसको करते हैं, गला घोट दिया इसका। फटाफट से इसके कपड़े भी मैं निकाल के लेता हूँ एंड इसको उठा के ये वाली अलमारी के अंदर डाल देते हैं। ओके गाइस, देख रहे हो ना कितने तेज हो रहे हैं हम। चलो अभी फटाफट से यहाँ पर हम लोग बन चुके हैं इन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। Mr. Whitmer, प्राइवेट thank you for coming on इन्वेस्टिगेटर, such short प्राइवेट notice. डिटेक्टिव गाइस। A great tragedy has fallen upon us, गाइस and I इसको लग need रहा a है कि quick हम वही है, resolution, पर handled with कोई जानता ही नहीं कि absolute हमने तो स्कैम कर discretion. दिया इन लोगों के Results साथ। and discretion are my speciality. Very well. ओके I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will Okay. take over from here. I am Mr. Fernsby of Butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Do you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? तो ओके गाइस, अभी हम I लोग prefer to इस get started. बंदे As के you पास में आ wish. चुके हैं। If you'll follow me, sir. ओके, तो हमें इस बंदे को जो है फॉलो करना है, चुपचाप से फॉलो करते I हैं। feel आगे जाके obliged to देखते हैं point तो out भाई हमारा that गेम मच current जाएगा यार। affairs surrounding Madam Carlyle मर are of जाएंगे a अपन नहीं तो, delicate उनको nature. पता चल सकता है इसलिए। You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn ओके, that a तो staged चुपचाप से इसके funeral पीछे पीछे is चलते हैं scheduled गाइस, to take देखते place हैं tomorrow. क्या करते हैं ये। Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please Okay. bear with them. Looking good if they seem today, sir. affected by the rather unusual थैंक यू थैंक यू थैंक situation. यू, लुकिंग गुड टुडे। I trust Bye, I bye. do not need to remind you चलो that ठीक there है। will be consequences if word gets out that Madam ओ भाई Carlyle ये is कौन है? still alive. हेलो I'll हेलो, consider आप her कहाँ से आ गए dead भाई? when I हेलो, leave. हाँ ठीक है। Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. ओके The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've अरे prepared भाई some कितना ज़्यादा information चमक for रहा है, you, उसका मुंह नहीं दिख so रहा। please do come and see me देख when रहे you ना अपने finish your ग्राफिक्स की investigation of the शक्ति। crime scene. This is Mr. Zachary's room. ओके, To my तो हमें right. इस रूम में जाना है। A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. ओके Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? ओके, तो अभी हमें यहाँ पे अपना कैमरा यूज़ करना है एंड स्कैन करना है उसकी बॉडी को। अरे कर ले यार स्कैन। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने हमारी फ़ोटो ले ली है उस बंदे की एंड पास से Throat स्कैनिंग markings बॉडी स्कैन। indicate a rare, short-lived plant poison killed him. ओके Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. ओके, तो गाइज वो उसकी मौत जो है पॉइजन से हुई है यार। अगर हमें भी पॉइजन मिल जाता तो बहुत सही होता। ओ भाई ये क्या है? ओ भाई A hidden एक door. नंबर गाइज, It's a secret passage. सीक्रेट This could explain how the door was locked from the inside. क्या A मिला? photocopy of the floor plans. ओके, यहाँ के Somebody's floor plan been की photocopy researching मिल the चुकी है secret guys। ins and outs of Thornbridge Manor. I'm sure there's more to find in Zachary's room. ओ भाई साहब, गजब भाई गजब। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं वापस इसी कमरे के अंदर। कुछ क्लू मिल जाए यार। अलमारी का क्या करूँगा यहाँ पर? ओके Zachary's suicide note. ओके, सुसाइड नोट मिल Also, चुका है। a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples कंप्यूटर to मिल चुका है, establish हैक its वैक authenticity. करने में काम हो सकता है गाइस, देखते I हैं believe कर you've done a सकते thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm Okay. curious about the information he's prepared for you. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. हैं। गाइस हमें शायद इस बंदे को मारना पड़ेगा।
शायद हमें यहाँ से और ऊपर जाना पड़ेगा शायद। तो ओके, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से तो नीचे आ गए हैं, देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा इंटेल। Hi there. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Okay. Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you Okay. ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Okay. This is very useful information, 47. George Charles, Edward Charles, Rebecca Charles, Emma Charles, Patrick's, guys, Fedricks, अपना CID वाला Fedricks. So नहीं, how नहीं does यार, one मजाक कर solve रहा a हूँ यार, murder Fedricks, mystery, Fedricks, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you Okay. ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying. Patrick Carlyle, So watch Okay. yourself. can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Mhm. Elaine, give us some privacy, would you? Okay, तो वो उसको Don't tell बाइक mother, को okay? बोल रहा है कि She's हमें थोड़ी really tense प्राइवेसी these चाहिए। days, and the last thing तो I need चला is जाओ more यहाँ से। hassle. I took that pretty टक लिया। blonde, Rosie, पटक for an लिया, evening क्या बोलते हैं पता stroll. नहीं मेरे को तो I mean, कुछ idea how नहीं। the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Okay. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. Okay. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. Okay. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. Okay. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Yo, Anne, what's up? Relax, man. I said I'd get you money. It's just gonna take a little longer. Jeez, and how's that my fault? Calm the fuck down, Ant. You know अब I'm क्या good for करना it. I'm है a यार? Carlisle. I'm made of money. Just gotta go. अब क्या करना है? ओके, तो अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके गाइस एंड इधर की तरफ में एरिया डिस्कवर्ड हो चुका है। ओके, ये कोई इंटेल है। Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, Okay. I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my... Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays तो अभी here. हमें गाइस वो Honestly, जो I लड़की can't है say which is the उससे भी bigger पूछना ball. है। He's better off dead. Is that all? Not very... Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she?
faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm Okay. not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful गाइस हम लोग तो migraine ऐसी and had मस्त to take एक्टिंग to कर रहे हैं bed. जैसे कि हम लोग ही Everyone can डिटेक्टिव है attest to पर हम that. तो I believe I जिसने went हमें up when बुलाया है the boys उसी को sat down मरने for a हैं drink around 8 o'clock. Guys, Anything else clever you want mind. to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about Okay. plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Okay. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay. तो अभी क्या करना है? अरेंज वाल नहीं करना है भाई. डाइनिंग रूम. ओके ये रहा Professor हमारा Edward ग्लैंडर. Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. Okay. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to run. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Okay. Sure, he was upset by Mother's supposed death. You were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? Okay. Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Okay. Excuse me. ओके तो वैसे भी यहाँ से फटाफट से हम लोग आगे की तरफ में बढ़ जाते हैं. एंड अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं? किचन में. ओके अभी हम लोग किचन में आ चुके हैं पर यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकल के भाई अभी हम लोग ये कहाँ आ गए? हेलो. अरे खोल भाई. ओके 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 तो अभी गाइस हमने सबसे बातचीत कर ली है शायद से या एक आधी और कोई बच गया है. आई थिंक ओके इस लड़की से और बात करना है शायद. अबे रुकना. अरे रुक जा यार मेरे को तेरे से बात करनी है. रुक जा. Apparently busy. Rebecca Us. Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared Okay. straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I Okay. spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. अच्छा. She did act a bit strange. You Okay. know, I bet she was making lists for changes needing to be done.
once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? चलो ओके गाइस, अभी तो हमने सभी से पूछ ही लिया है, कोई बचा है क्या? ओके, तो अभी तो गाइस हमने सभी से क्वेश्चन आंसर्स तो कर ही लिए हैं यार, अब तो कोई सीन को लग नहीं। तो ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस से ये वाले रूम में, एंड यहाँ से भी हम लोग को इस तरफ में जा रहे हैं, बाहर की तरफ। एंड लो, ये एक्चुअली बाहर की तरफ नहीं है, ये उनका बैकयार्ड है। Ethel looked everywhere. You've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expects the family photo to be done any moment now. ओके, यहाँ पर हमें ये मिल चुका है रेंज, मिली वेपन है। अच्छा है, अच्छा है। अरे ओके, तो अभी शायद हमें यहाँ से अंदर लॉक गई, सारे डोर लॉक है यार यहाँ से तो। ओके, ये डोर तो पैक ही है, यहाँ से अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। आई थिंक कि मुझे अंदर जाके करूँगा क्या? ओके, तो यहाँ पर ये मुझे कुछ शीयर जैसा मिल गया। ओके, क्रॉसबो मिल गई है, काउ बार, क्रॉस बार, भाई ऐसा ही कुछ रहता है ना। ठीक है, अभी खुल जा सिम सिम। हाँ, ये तो चल, अभी हमने ये वाला एरिया अनलॉक कर लिया है। Broken एंड lab अब equipment. It looks like it was recently used, though. ओके, प्रोड्यूस पॉइजन, पिकअप। ओके, तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा पॉइजन। अब हम पॉइजन से भी उसे मार सकते हैं, और पॉइजन और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में कोई कमी थोड़ी है भाई, बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने पॉइजन बना लिया है। ओके, कैमरे के ऊपर मैं शिफ्ट हो गया, स्कैन करते हैं ये बुक को। This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. ओ भाई साहब, तो शायद ये जो हमारी को जिसको हम मारने हैं, शायद से जो है वो भी, मतलब उसको भी पॉइजन देके मारने ही वाले हैं, बट उससे पहले हमें मार देना है गाइस। ओके, यहाँ पर हमें फुटप्रिंट्स मिल गए, तो फुटप्रिंट्स को हम करेंगे क्या? यूज कैमरा टू स्कैन, पेंटिंग स्कैंड। अब क्या करें, क्या करें? स्कैनिंग, ओके।
ये भी स्कैन कर लिया हमने, सब तो स्कैन कर लिया गाइस। अब क्या, अब बस चलते हैं यार। मैं तो सोच रहा हूँ उसको सीधे निपटा ही देते, क्या बोलते हो गाइस? इस तरफ में मैं गया था क्या? हमारे को जो टारगेट तक जाना है। ओके, तो अभी इस तरफ में भी चल के देखते हैं। यार ये तो पूरे घर में कहीं भी जाओ घूम फिर के हम लोग बार बार यहीं आ जा रहे हैं। ओके, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ये भी हमने स्कैन कर लिया है। मतलब यार इनको ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि हम लोग डिटेक्टिव नहीं है, इनको यही लगना चाहिए कि हम लोग डिटेक्टिव है। ओके, तो अभी यहाँ से ऊपर, हाँ ऊपर की तरफ में चलते हैं। एंड ओके, तो इस तरफ में शायद मैं आया था। ओके, ये इसकी जरूरत That नहीं door होगा। leads to Emma and Gregory's room. ओके, सो यहाँ पर हमें एक चाकू मिल गया। ओके, बहुत सही गाइस, हमें चाकू भी मिल चुका है और क्रॉसबोर भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी चीज़ें मिल गई हैं। Hello, sir. Okay. इन्वेस्टिगेशन द डिस्ट्रैक्शन। तो अभी हमें ये बात गाइस, हमें ये डोर खोल के सर्चिंग गाइस, सर्चिंग करके आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, वॉकिंग। ओके, वो डंडा मतलब क्या होता है यार? लाठी, लाठी की डंडा। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. Okay. So guys, I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. एमा जो है गाइस, वो जो है वो मर्डरर है। एंड ये क्या है? इसको भी विस्की। अबे विस्की को क्या स्कैन करके करूँगा? ओ भाई 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 भाई, Jeez. सॉरी 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 सॉरी, गलती से धक्का लग गया बे। अब क्या क्या मार ही डालेगा क्या? That is the door to Rebecca's room. तो कोई देख तो नहीं रहा ना? बहुत सही। बस ये डोर यहाँ से अनलॉक कर दें। और क्या है भाई यहाँ पे? और क्या क्या है? हेलो 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 सर। एक्चुअली गाइस, यहाँ पे हमको फ्लोर प्लान मिल गया था ना, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। ओ भाई साहब, गजब भाई, ये तो अलग ही सीन है भाई। इसमें से क्या झाँक के देख सकते हैं भाई? ये तो खुफिया रास्ते दरवाजे बना रखे हैं कि यहाँ से झाँक लो, वहाँ से देख लो। एक नंबर। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे भैया। ओके, तो यहाँ पर एक शिट गाइस। ओ भाई 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 भाई
इधर ही खिड़की पे खड़ा था, इसको चुपचाप से हम ट्रैप करके, ठीक है, तो हमने इसको चुपचाप से गाइस इसके अंदर डाल दिया है एंड सीधे मारे डाल देगा, इसको ख़त्म कर दे। आठ आइए गाइस, इसको हमने मारा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। ओके तो इसको भी लेके चलते हैं। अबे अबे गधे चल, अबे यार, हाँ चलो अब आ जाएगा गाइस। वो कुर्सी में ना उसका पैर फंस गया था। ठीक है तो अभी इसको भी गाइस हम इसके अंदर डाल देते हैं। बॉडी हिडन, बहुत सही गाइस, बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए हम। This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. ओके तो चलो गाइस, यहाँ पर इसकी गन मिल गई है शायद। ओ भाई सब बाहर की तरफ में 2 गार्ड्स और हैं। देखते हैं गाइस, वो टारगेट हमारे से बहुत ज़्यादा पास ही है, तो ओके ये रहा इन्वेस्टिगेट। I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. ओके इंटेल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनसे भी पूछ लिया क्वेश्चंस और क्लूज वगैरह में जमा। ओके मिस्टर फर्नसबी's ऑफिस, द ग्रीन हाउस, द प्राइवेट इन्वेस्ट। मैं ये क्या कर रहा हूँ यार। ओके मैप में अब एरिया अनडिस्कवर्ड पे नहीं जाना है। ठीक है तो ये रहा हमारा इंटेल, तो फटाफट से Did I इंटेल। understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she'll be in trouble? Find the case file. Okay. तो गाइस अभी हम लोग को केस फाइल भी ढूंढनी है। पर हमारे पास में भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हमें फटाफट से ये मिशन भी कंप्लीट करना है यार। That is the door to Mr. Fernsby's office. ओ भाई साहब, तो यहाँ से सारी पावर वगैरह कंट्रोल होती है, तो हम लोग पावर वगैरह भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। इंटेल आइटम ऑब्टेन्ड, ओके इंटेल मिल चुका है कुछ नया। Painkillers. Okay. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Such a gentleman. Okay guys, Gave अभी me हम his लोग coat and all. इधर मतलब Rosie, किचन you need की to साइड में forget थोड़ा सा आ about चुके हैं। Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your यार own पहले तो हमें kind. केस फाइल ढूंढनी पड़ेगी ना, नहीं तो गाइस ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance.
I deserve romance. भाई ये कहाँ आ गया मैं? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी अनलॉक करते हैं। इधर क्या है भाई? बनाना, अरे हट। ओके, इंटेल हमारे तरफ नहीं खड़े, हमारे तो हमारे पास में ही खड़े दद्दा जी। पर अभी यार इंटेल के पास जाके कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो केस फाइल वगैरह का थोड़ा लफड़ा जो हो रहा है। वापस अंदर चलो, वापस अंदर चलो। Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. A copy of the case file. Next time this file on the other Edwards into the works. ओके ठीक है, उसका तो कोई सीन नहीं है आरोपी। ठीक है ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग इंटेल से बात I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ओके, तो वैसे भी हमें इसे फॉलो करना है। Looking good, looking good. अरे भाई थैंक यू, कितनी बार बोलेगा लुकिंग गुड लुकिंग गुड। ठीक है, तो अभी चलते हैं इन महाशय के पीछे, मतलब इन भाई साहब के पीछे पीछे। ये हमें देखते हैं कहाँ लेके जाता है। ओके, तो आई थिंक ये शायद हमें उसके कमरे में लेके जा रहे हैं। ओके 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 ओके, हाँ ये वाली सीढ़ी पे तो मैं गया ही नहीं यार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं इसके साथ में जाएंगे ना तो गाइस हमें कोई बॉडीगार्ड वगैरह रोकेगा नहीं, तो ये एक बहुत सही वाला फ़ायदा हो जाएगा हमारा। ठीक है। ए मारो मत। हाँ ठीक है। बस इसके गाइस पीछे हमें चलते जाना है। This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ओके, तो हमें यहाँ पर अंदर जाना है। अरे शिट भाई ये तो कांड हो जाता अभी। Your detective skills have gained you Mission access to story the Lion's completed. Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Okay. Please, go ahead. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. Okay. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlisle Empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlisle Empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the
girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Okay. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gallery to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the Constant. But how do you... Oh, I see. Okay, तो हमें guys case I file तो expected you चाहिए might थी. show up. बहुत But to सही kill भाई. me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. Okay. ओके तो गाइस ये शायद से भी हमें केस फाइल दे रही है. File you want is in the boom. safe. गाइस मजा आ गया. God, I hope you get Edwards and make him hurt. I need some privacy. Thank you. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. खत्म. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Oh, boom. Mission complete. एक नंबर गाइस. अभी फटाफट से यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो जाएगा. चलो तो गाइस एक फ़ायदा तो ये होगा कि वहाँ से घूमने फिरने में हमको उसको कैसे मारना है वो तो पता चल गया था. तो अभी फटाफट से यहाँ से एग्जिट करते हैं नहीं तो भाई सब कांड हो जाएगा भाई. भाग 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 47 जल्दी भाग. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो अभी तो कुछ नहीं करना है यार. अभी फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं. भाग 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 47 भाग. ओके भाग ले जल्दी से तू भाग रे. ओके तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं. बहुत सही गाइस. 47. They're everywhere. Go, get out. It's the Constantine. Shit. ओ भाई पता नहीं ये क्या हुआ गाइस. जो हमको कमांड दे रहा था वहाँ पर से कुछ ब्लूटूथ में हमको साउंड आया है एंड वहाँ पर गोली वगैरह चल रही थी. पता नहीं क्या ही सीन था. तो चलो यार गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना एंड आगे बता देना मतलब कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए या नहीं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.